Hello, hi everyone. Welcome back to the world of biology. And in today's session, I'm going to teach you about plant physiology. So, in plant physiology, we are going to talk about first transport in plant. It's a 11th class chapter, and in 11th, it's a fourth unit of plant physiology, and there's a first chapter that is transport in plants. So, today we are going to study about this. So, let's get started. So first I want to give you a basic introduction of plants. तो अगर हम plants की बात करते हैं, so plants have different parts, leaves, stems, roots, flowers. ये बहुत basic है और ये हर किसी को पता होता है. Even kids also, that they are the part of plant, basic parts of the plants. Now, if we will talk about, here you can see in the diagram that a root is differentiated into tap root, as you can see here, and lateral roots. Okay, because there are two type of roots: tap root and fibrous root. Tap root, where a radical arise into the primary root, and then it gives secondary, tertiary, like this. Okay, but if we will talk about the fibrous, so in radical there is a cluster of roots. All the roots arise from this point only. So this type of this cluster is known as fibrous root. So there is a basic example of plant actually. So as you can see, these are the leaves, and from where leaves arises, that point जहाँ से वो grow करती हैं, that is known as node. This is another node, right? And in between this distance, this is known as internode. Okay, distance between two nodes, you can say that. Now, what is the function of leaves? Everybody know, photosynthesis primary function है ये plant का. Food formation में ये help करते हैं क्योंकि chlorophyll यहाँ पे present है. अब now, after the formation of food, food is transport into the different directions. Okay, food is transport into the this direction, means different, multi-direction. So that's why you can say that it is multi-directionate. Okay, now पानी कहाँ से मिलेगा प्लांट को? Obviously पानी के लिए सोर्स है जो है वो ये हमारा अर्थ, ठीक है. और अर्थ जहाँ से सॉइल के अंदर जहाँ रूट प्रेजेंट है, सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. You can say that roots take water away from the soil and give it to the other parts, but only in this direction. You can say that lower direction to above, one direction only. So that is unidirectionate. Yes, unidirectional है. Now, अगर मैं कुछ छोटे प्लांट्स की बात करूं तो उनके अंदर जो वाटर ट्रांसफर है वो इजी है. वो डिफ्यूजन के थ्रू, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू, इवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है. बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दैट इज बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. And this translocation by xylem tissue and phloem tissue. These are the vascular system of plant. Vascular bundle बोलते हैं ना जैसे हम, वो xylem और phloem ही है. So don't be confused. जहाँ पे भी vascular bundle की बात आ रही है, means we are talking about xylem and phloem. And the function of xylem is to take water, and the function of phloem is to take food. So this is about xylem and phloem. Now class, if we'll talk about other things, like only food and water ही present नहीं होता plant के अंदर, some important nutrition, hormones, these are also present in the plant, and they are also transferred from one point to another point. But hormones and other stimuli are present in a minute quantity. Okay, but food and water, they are present in the large quantity. वो ज़्यादा amount में plant को चाहिए.
Now let's talk about the main topic, and the name of the topic is means of transport across the cell. See, आप अब ये प्लांट आप देख रहे हैं, तो प्लांट के ये जो बिल्कुल आउटर पार्ट है, दैट इज सेल वॉल, राइट? दिस पार्ट इज सेल वॉल, जो उसको पूरी कवरिंग देता है, कंप्लीट कवरिंग, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा. So in plant, cell wall, cell membrane, both are present, but in animals only cell membrane is present, because plant are fixed, they cannot move from one place to another place, but animal can move from one place to another place and they can protect themselves. एनिमल्स अब जब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो सनलाइट है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, वो अपने आप को हाइड कर लेंगे अगर जो कंडीशंस हैं दैट आर नॉट गुड. ठीक है, but plant cannot do this. Plant cannot move from one place to another. That's why plants have additional covering, and that is cell wall. Okay, so let's get started with the transport across the cell. So means of transport across the cell, here are three type: diffusion, facilitated diffusion, and active transport. अब आपने diffusion, facilitated diffusion and एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन आपने पहले भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th के अंदर भी. बहुत इजी प्रोसेस है डिफ्यूजन, और बहुत सिंपल प्रोसेस है. फर्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन इज अ पैसिव मूवमेंट. ओके, इट्स अ स्लो प्रोसेस, पैसिव मूवमेंट, एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस, as well as it transport gases and liquid inside the cell. क्योंकि अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड भी ट्रांसफर हो जाता है, but it takes lot of time. Okay, there is no need of expenditure of energy, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, and this movement is along the concentration gradient. So अगर along the concentration gradient है, so there is no need of energy. Okay, so यहाँ पे particles and they are moving from here to there, and this is cell wall, so they can easily pass from it. So that process is diffusion. You can write, when particles are moving from higher concentration to lower concentration until they become constant or until equilibrium is reached, that is known as diffusion. प्लांट के अंदर जनरली डिफ्यूजन गैसेस को लेके होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. ठीक है, सो दैट इज डिफ्यूजन. नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड एक वर्ड ही ऐड हुआ है, और इस वर्ड के ऐड होते ही एक प्रोटीन भी ऐड हो गया सेल के अंदर. यहाँ कोई प्रोटीन नहीं है, यहाँ प्रोटीन है. देखो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सेम ईयर हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे कोई फैसिलिटेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अपने आप ही पास हो जाते हैं, बट यहाँ फैसिलिटेट करने के लिए परमेज प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर. Permease is present in the cell membrane, which allow the passage of substances. Okay, and see, they have specific configuration suitable to particular particle. कि specific particle specific protein की help से, permease की help से pass होगा. So अगर मैं facilitated diffusion की बात करूं, तो protein transporter जो है, इसमें aquaporins भी आते हैं. Now you will say, what is aquaporins? Aqua means water and porins means again protein. ठीक है, और ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन हैं जो वाटर को अलाउ करते हैं. दे गिव पैसेज टू द वाटर थ्रू देम, एंड ईच वाटर चैनल इज सराउंडेड बाय 8 प्रोटीन. हर एक वाटर चैनल जो है 8 प्रोटीन से दैट अलाउ पास टू वाटर फ्रॉम द सेल. सो पोरिन्स आर प्रोटीन, और ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? द प्रोटीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन. Okay, they are always present to the outer membrane of mitochondria, plastids, several bacteria, which allow passage of small size solute. So that is facilitated diffusion. I think आपको difference भी समझ में आ गया diffusion और facilitated diffusion में. Now the next type is active transport. Okay, बट उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बता देती हूँ, और दैट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी. इसमें सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है. सो एज यू कैन सी, फर्स्ट यूनिपोर्ट single particle pass from the cell membrane in a same direction, obviously single direct
है तो एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा, दैट इज यूनिपोर्ट. नाउ एंटी अगेंस्ट टू पार्टिकल, one in the another direction and another is the opposite direction of the first, so that is antipode. And sympode, both are moving in the same direction, that is known as sympode. So these are the types of facilitated diffusion on the basis of their direction. Now active transport, हमने फैसिलिटेटेड पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा, तो अब आप एक्टिव में देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है एक्टिव और इन सब में. एक्टिव जो है वो क्या है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है उनसे. हेयर पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इफ पार्टिकल्स आर मूविंग means that is uphill transportation, you can say that. Okay, uphill transportation and against concentration gradient. अगर against concentration gradient है तो there is a needed much more energy. I'll give you example. See, if wind is moving north to south, ठीक है, और आप उसी डायरेक्शन में ही साइकिलिंग करते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो दैट विल बी इजी फॉर यू. बट इफ यू आर डूइंग साइकिलिंग साउथ टू नॉर्थ अगेंस्ट the wind, so you need lot of energy that time. Same in this process as well. So there is a needed of ATP energy, adenosine triphosphate, that is energy currency. Okay, and protein as well. These are the special type of protein that involves expenditure of energy because that is against the concentration gradient. यहाँ पे जो carrier protein involved है, that is also known as pump. Okay, pumps we can say that. एंड इसका मतलब है कि जो एनर्जी है इज यूज टू एक्टिवेट द कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन्स को जरूरत है एक्टिवेट होने के लिए, एंड द एक्टिवेटेड कैरियर पिक अप सोल्यूट फ्रॉम द मेम्ब्रेन सरफेस and form solute carrier complex, and the complex move in the membrane to bring the solute bearing part towards the other surface, and now the complex breaks and solute is released. So the free carrier protein is again changes its position to pick up solute again. So ये cycle one by one ऐसे ही repeat होगी. So you can write inactive transport, yes, special membrane required. Highly selective transport saturate, yes, uphill transportation and requires ATP energy. So this is all about the active transport. As you can see here, particles are moving from low concentration to high concentration. There is a needed of ATP energy, special type of protein. So this is a third type of transport. Now see, this is the difference between all the type of transportation. Let me clear first. Yes, now you can see here. Okay, so passive, active, two type of transport first. So as you can see, it's simple, there is no needed of protein, nothing. So this is simple diffusion. Okay, here are two channels, in between them pore is present and particle is moving, so that is two channel mediated. Okay, here is this one is a carrier that help to transfer something. Carrier protein is present here actually, so protein help to pass the particle, that is known as three carrier mediated. ठीक है, किसी की हेल्प से ट्रांसफर करना, तो ये दोनों आ जाएंगे मीडिएटेड के अंदर, फैसिलिटेटेड के अंदर, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन. एंड द थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये है अपहिल, ये है डाउनहिल, मींस यहाँ लो पार्टिकल्स है और यहाँ हाई पार्टिकल्स है. सो हाई टू लो पास होना, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी. बट देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे लो टू हाई particles are moving, low to high, so that needs lot of energy, and that is active transport. So these are the three type of transportation as you can see in the plants. Now let's start with the another topic. This is all about the basics. Okay, in detail we will study in coming slides. So plant water relation. What is plant water relation? Water, everybody know water is very essential for all the activities.
in human being, in other animals, in plants. Okay, so अगर मैं herbaceous plant की बात करूं तो they have 85 to 90% of their fresh weight as water. अगर हम वाटरमेलन की बात करें जिसका नाम ही वाटरमेलन है, ठीक है, दैट कंटेन्स 92% वाटर. अब अगर मैं किसी वुडी पार्ट की बात करती हूँ, सी लाइक यू विल सी दिस प्लांट हियर, और ये जो पार्ट है ये वुडी पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी लेसर अमाउंट ऑफ वाटर है एज कंपेयर टू सॉफ्टर पार्ट. अगर मैं किसी ड्राई सीड की बात करती हूँ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हैविंग 10 to 15% वाटर. क्यों? क्योंकि जब हम उसको दोबारा से वाटर सॉइल के अंदर डालते हैं तो दैट स्टार्ट ग्रोइंग अगेन. सो विदाउट वाटर दे कैन नॉट रिमेन अलाइव. Okay, so requirement of water by land plants is very high, very very high. So now ऐसा रीजन क्या है इसका कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए? क्योंकि ये लीव्स प्रेजेंट है, यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटाज आर द पोर्स. तो जैसे ही सनलाइट आती है और उस टाइम पे हाई टेम्परेचर के अंदर एक प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन, वो प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है. ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर with the help of stomatas, tiny pores. So the requirement of water is high in land plants due to losing huge amount of water in transpiration. अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, प्लांट ऑफ मेज, कॉर्न जिसे हम बोलते हैं, मक्का, और दैट absorb 3 liter of water per day, and a plant of mustard absorb its own weight of water in 5 hours. So this is all about the absorption. As well as the water is a source of oxygen in photosynthesis and hydrogen for chemical assimilation. So water play a very important role in plant. Without water, plant cannot survive. There is no chance of survival. And there is a various forces involved in absorption and movement of water, that is diffusion, osmosis, plasmolysis, imbibition, active absorption, and bulk flow. So that is all about plant water relation. Okay, hope you understand about the basics of plant water relation and types of intake of water, like diffusion and facilitated diffusion as well as active transport. Hope you like this session. Thank you so much. In next video, I'm going to teach you about diffusion, osmosis, factors, membrane permeability, and more about this chapter. Again, thank you so much.